Hello students, my name is Abhijit Gupta and you are watching Matho Science YouTube channel. Good morning, good afternoon, good evening. जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, today we will start the new topic of class 10th subject math. The topic is pair of linear equation in two variable. This is chapter number 3. Okay. Before we start this pair of linear equation, first let me clear one thing about what is linear equation. Okay, suppose you have given one expression ax plus by plus c is equals to 0. This is the linear equation. Linear means it has graph a straight line एंड इसकी यहाँ पे डिग्री जो है वो भी 1 है. ठीक है, इक्वेशन क्यों? क्योंकि ये इक्वल टू 0 के इक्वल है. ठीक है, कोई भी इक्वेशन फॉर एग्जांपल लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल हमने क्लास चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा 2x स्क्वायर प्लस 3. फॉर एग्जांपल ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको बोलेंगे. अगर इसको मैं इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा देन इट विल बिकम क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, देन यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड सिंपल लीनियर फंक्शन. तो इक्वेशन कब कही जाएगी? जब वो इक्वल टू 0 होगी. एग्जांपल के से समझते हैं. जैसे कि आपको दिया गया है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0. दिस इज द लीनियर इक्वेशन. अब यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल आर गिवन. So this is a linear equation in 2 variable in which this 2 is a and here this is b and this is c. So आपको ये इक्वेशन इसके सिमिलर लग रही है इसीलिए इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन. ठीक है, अब पेयर की बात करें, अगर हमारे पास दो इक्वेशन दे दी फॉर एग्जांपल 3x प्लस 7y प्लस 10 इक्वल टू 0 and x plus 5y plus 2 is equals to 0. ठीक है, तो ये है पेयर. ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. दिस विल बी ट्रीटेड एज a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and this is treated as a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. Okay, so general form of pair of linear equation becomes a1x plus b1y plus c1 is equals to 0. Okay, and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. Okay, so note down this. Definition are given here. Very important condition of pair of linear equation is, suppose you have these two equation in which a1 square plus b1 square is not equal to 0, a2 square plus b2 square not equal to 0. ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, otherwise these equations will not be valid. Okay, this is a very important condition of linear equation in two variables. Now we will see consistent system and inconsistent system. In consistent system we will see pair of linear equation is said to be consistent if they have at least one solution. उनका कम से कम एक सॉल्यूशन होना ही चाहिए. जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो उसका जो आंसर होते हैं x y उसको बोलते हैं सॉल्यूशन. उससे कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए
तो उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में आपका आएगा, सेम आप उसको नोट करोगे, दे हैव नो सॉल्यूशन, मीन्स you cannot find the value of x and y. If you're not getting the value of x and y, then the system is said to be inconsistent. Now we will see method of solving pair of linear equation. There are basically two methods of linear solving equation. Number one, graphical method. Number two, algebraic method. Graphical method. Now I will explain you this graphical method with the help of this example. In graphical method, we draw the graph of these two equations. In class 9th, you have studied about how to draw the graph of linear equation. We will use that method only. First, we will take first equation, x plus 2y is equals to 5. So out of these two algebraic expression, this x is alone, इसको मैं लेफ्ट साइड ही रखूंगा और इसको मैं राइट साइड भेज दूंगा, ठीक है। जो y जो है राइट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में है। जो राइट साइड में होता है उसकी वैल्यू हम अपनी मर्जी से पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने वैल्यू इसकी y की 0 ली, व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 minus 2 into 0. This becomes 5 minus 0, 5. X equals to 5. When you will take y is equals to 2, you can take any value. 5 minus 2 into 2, this becomes 5 minus 4 is equals to, this is 1. So when y is equals to 2, x is 1, and when y is equals to 0, x is 5. One more value you can find, that y is equals to 3. Let y is equals to 3, then x becomes 5 minus 2 into 3, 5 minus 6, this becomes minus 1. Then at y is equals to 3, x is minus 1. Okay, now we will draw this graph. You take this, now we have points. A point is 5, 0. B point is, this is A point, this is B point, this is C point, 1, 2. C point is minus 1, 3. Okay, now we will draw the graph. This is your Cartesian plane. Now we will plot the values. First is A point. A is 5, 0. It will be 5, 0. This is A, 5, 0. Now B point is 1, 2. This is 1, 2. This is 1 and this is 2. This will be B point, 1, 2. Okay. Now this is C point, minus 1, 3. Minus 1, 3. Here it will come. Okay. This is C point, minus 1, 3. Okay. Now we will join these all 3 points to get a linear equation. You will use the scale. Okay. Now write down the equation name, x plus 2y is equals to 5. This is the correct procedure to get full marks in your examination. Okay. Follow each and every step. Now we will solve the second equation. Now we will consider the second equation. 3x plus 2y is equals to 7. 3x is equals to 7 minus 2y. X is equals to 7 minus 2y upon 3. Okay. Now take the value of y and you will get the value of x. Let's take the value of y is equals to 2. Then you will get x equals to 7 minus 2 into 2 upon 3.
7 minus 4 upon 3, this becomes 3 upon 3 is equals to 1. X is equals to 1. This is P point. So P point comes 1 comma 2. Now take the value of y is 5. You can take any value, but I am selecting those values which reduces the calculation. डेसिमल फ्रैक्शन हमें अवॉइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 7 माइनस 2 इंटू 5 अपॉन 3, 7 माइनस 10 अपॉन 3, this becomes minus 3 upon 3, this is 1 minus 1. तो when this is minus 1, okay, टू वैल्यूज आपने निकाल दिए, आप इसी से प्लॉट कर सकते हो. दिस इज क्यू पॉइंट 5 कॉमा माइनस -1 कॉमा 5. ओके, P point will be 1 comma 2, 1 comma 2. This is P point, same point is P, 1 comma 2. Q point -1 comma 5, -1 comma 5 here. This will be your -1 comma 5 Q point. Now we will draw a line by joining these 2 points. You will use scale, okay. Here these 2 lines are crossing at the point of intersection is 1 comma 2. So this is a solution of above equation. Okay, so this is a graphical method to find the solution of 2 pair of linear equation. Okay,